Hello my dear students, we will continue with our discussion of some more numerical problems. We are discussing textbook problems. So today let us discuss this 11th problem. This is on page number 250. It says that we have a circular loop, and the radius r is equal to 9.7 centimeters. Okay, so this is equal to 9.7 into 10 to the power of minus 2 meter. The current flowing through this is 2.3 amperes. Now he is asking us A to find the magnetic field at the center of this loop. Now we know that the magnetic field at the center of a circular loop is given as mu0 I upon 2r. Okay, so let us put the values. B is equal to this. So now put the values. Mu0 is equal to what? Mu0 is equal to current दिया हुआ है रेडियस. ओके, mu0 is equal to 4 pi into 10 to the power of minus 7 into current is 2.3 upon 2 into radius is also given, that is 9.7 into 10 to the power of minus 2. Okay, so let us solve this. 2 2s are 4, so this is equal to 2 into 3.14 into 2.3 upon 9.7 into 10 to the power of, this is minus 7, this is minus 2, so this will be 10 to the power of minus 5. Okay, so let us now multiply the terms in the numerator. This is 6.28. 3.14 into 2 is 6.28 into 2.3. So let us multiply this. This is 14.44. We divide this by 9.7. This is 14.44 upon 9.7. So इसको क्या करते? 14.44 upon 9.7 है ना? So 970. इसको divide करो. 970 is 970. 4 7 4 4,709 1,000 and then so it will be 4. Okay, 28 26 38 0 8 1.48. So this is equal to 1.48 into 10 to the power of minus 5. This is what? Tesla. Clear? So this is the magnetic field wave at the center. Clear? Now this tallies with your textbook answer also. ये एक answer बराबर दिया हुआ है textbook में. Then he is also asking us to find out the magnetic field at an axial point. ये इसका axis है. यहाँ पे एक्चुअल पॉइंट पे फाइंड आउट करना है. एट व्हाट डिस्टेंस? एट अ डिस्टेंस ऑफ 9.7 सेंटीमीटर्स. ओके, 9.7 सेंटीमीटर्स पे एक्चुअल पॉइंट एक है. यहाँ पे हम लोगों को इसका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो दैट इज पार्ट बी. लेट अस डू दैट. सो दिस इज पार्ट ए. पार्ट बी इज एट एन एक्चुअल पॉइंट. सो जब एक्चुअल पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम लोगों के पास फार्मूला क्या है? अब इसके लिए हम लोगों को दिया हुआ है z. दिस इज सेम एज r बिकॉज 9.7 इज द रेडियस. 9.7 सेंटीमीटर पे वो पॉइंट भी दिया हुआ है. सो उसको तो हम z से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्चुअल पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट? mu0 अपॉन 2 I r स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या है? z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2. This is the formula that we had derived also. ये derive भी किया है हम लोगों ने. अभी क्या करेंगे इसको?
this is equal to mu 0 upon 2 I into r square upon, अब z is same as r, okay, this is equal to 9.7 centimeters. So इसको क्या करते हैं, r z को भी r लिखते हैं, r square plus r square to the power of 3/2, मतलब this is equal to mu 0 by 2 into I r square upon r square plus r square is 2r square, okay, 2r square to the power of 3/2. So this is equal to mu 0 by 2 I r square upon, देखिए 2 to the power of 3/2 का मतलब क्या है, 2 to the power of 1/2 to the power of, देखिए this is 2 to the power of 1/2 to the power of 3, okay, 2 to the power of 1/2 is root 2, root 2 का क्यूब क्या होगा, 2 root 2, क्लियर. So इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, we will write this as this is 2 root 2 this one into ये r स्क्वायर है, ये r to the power of 1/2, so ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, r क्यूब, क्लियर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. So now what you get, mu 0 upon into 4 root of 2 into I, ये r दो r to the power of 2 r to the power of 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, r. So now let us find out the values for this. Now this is equal to mu 0 is what, 4 pi into 10 to the power of -7, okay, into current is 2.3 amperes upon 4 root of 2 into रेडियस कितना दिया हुआ है, 9.7 into 10 to the power of -2, okay. So now this 4 will cancel, बचता क्या है, pi is 3.14 into this is 2.3 upon root of 4 2 you know 1.414 है, clear, into 9.7 into, अब यहाँ 10 to the power of -7 है, यहाँ 10 to the power of -2 है, so this will be equal to 10 to the power of -5, okay. अब रहा ये सॉल्व करने का, so इसको हम लोग क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दो, या तो फिर लेट अस यूज लॉग टेबल, ओके. सो यू कैन सॉल्व either by the direct calculations or by log table, and this comes out to 5.265, okay, ये कितना आ जाएगा, 5.265 into 10 to the power of -6, 10 to the power of -6 टेस्ला, okay, 10 to the power of -6 is माइक्रो, इसलिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 5.265 माइक्रो टेस्ला, क्लियर. टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है दैट इज रॉन्ग, सो ये जो आंसर है दिस इज द करेक्ट आंसर. आप लोग इसको लॉग यूज करके अगर कैलकुलेट करोगे यू विल इमीडिएटली गेट द आंसर, ओके. सो दिस इज द 11th प्रॉब्लम. नाउ लेट अस सी द 12th वन. आप लोग इसको पॉज कर करके देखिए, जहां भी जो भी स्टेप, एक एक स्टेप होने के बाद पॉज करते जाइए, सो देन यू कैन अंडरस्टैंड इट. चलो 12th क्वेश्चन क्या बोलता है, देयर इज अ सर्कुलर कॉइल which is made up of 100 turns, okay, so number of turns is equal to 100, then each of radius 8 centimeter. What is the radius, 8 centimeters, that is equal to 8 into 10 to the power of -2 meters. If a current of 0.40 ampere passes through it, what is the current, 0.40 ampere passes through it, what would be the magnetic field at the center of the coil, okay. इसके पहले का जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था, सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल से करंट पास हो रहा है, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये पूछा है. तो दिस इज वेरी इजी, हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2R.
सिंपली इस फॉर्मूले में रख देंगे. अब नंबर ऑफ टर्न्स n है तो इसको क्या कर देंगे, करंट विल बी इक्वल टू म्यू जीरो n इंटू आई. क्लियर. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू म्यू जीरो इज इक्वल टू व्हाट, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100 इंटू आई इज व्हाट 0.40. क्लियर. अपॉन 2 into what is the radius? The radius is 8 into 10 to the power of minus 2. Clear? So this is equal to तो इसको तो 2 2s are 4. So what we can do is this is 2 pi. इसको 2 4s are 8 ऐसा भी कर दो. Clear. So what remains is this is 10 to the power of 2, this is 10 to the power of minus 7, so this is 10 to the power of minus 5. और ये क्या हो जाएगा, this is 40 into 10 to the power of minus 2. So this is 40 into 10 to the power of minus 2 ये वाला, and this is 10 to the power of minus 5. So total कितना हो जाएगा 40 into 10 to the power of minus 7 upon अच्छा इंटू पाई है. ओके 40 इंटू पाई ये वाला. ठीक है. डिवाइडेड बाय ये क्या है यहाँ पे से बचा हुआ 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2. ओके so this is 4 10s are 40. So this will be equal to pi is 3.14 into 3.14 into this is 10 to the power of minus 6, this is 10 to the power of 1, no, 10 to the power of 1 into 10 to the power of minus 7 is 10 to the power of minus 6 and denominator में 10 to the power of minus 2 मतलब this is 10 to the power of minus 4. Here this is the strength of the magnetic field at the center of this circular loop. Okay, this is very easy. These are based straightforward on the concepts that we have studied. Only calculations कैसे करना है इसका practice करना बहुत जरूरी है. Next one 13th. What the question reads, for a proton accelerator a cyclotron is used in which a magnetic field of 1.4 Weber per meter square is applied. So what is the strength of the magnetic field? 1.4 Weber per meter square. This is same as Tesla. And find the time period for reversing the electric field between the two Ds. Okay, आप लोग जानते होंगे कि ये साइक्लोट्रॉन होता है. Okay, यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग एक अल्टरनेटर. इसका अल्टरनेट करते रहते हैं हम लोग पोलैरिटी so as to accelerate this. Clear? So he is asking us कि what is the frequency, what is the time period for reversing the electric field between the two Ds. Okay, so जितना भी टाइम पीरियड रहेगा किसका, इस प्रोटॉन का, उसका हाफ टाइम पीरियड रहेगा ये अल्टरनेट करने का. क्लियर? क्योंकि टाइम पीरियड मतलब क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट सर्कल. ओके, लेकिन वो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ पे हम लोगों को इसका पोलैरिटी चेंज कर देना है. मतलब इसका जितना टाइम पीरियड होगा उसका हाफ टाइम पीरियड किसका होगा, ये चेंज करने के लिए. ओके, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर. सो लेट अस कैलकुलेट नाउ. This is given. Okay, and other things, mass of the proton and all this, they are also given. Now what, how we calculate time period is equal to what? नॉर्मल अगर इस प्रोटॉन का, ये चार्ज पार्टिकल का अगर टाइम पीरियड पूछा होता तो हम लोग लिखते हैं 2 पाई m अपॉन क्यू बी. ओके, लेकिन ये टाइम पीरियड किसका पूछा है, इस ऑसिलेटर का, कितने चाहिए, तो इसके हाफ होगा, इसका मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे. क्या होगा, पाई m अपॉन क्यू बी. ओके,
Now let us put the values. Pi is 3.14. Mass of the proton जो दिया है वही लेंगे. Okay. Just a minute. इस प्रॉब्लम में ठीक है. यहाँ पे तो मास ऑफ द दिया हुआ है क्या? नहीं. ठीक है, हमको जो मालूम है वही वाला लेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है. 1.67 into 10 to the power of minus 27. Okay, it's not given, तो ठीक है जो हम लोगों को पता है. बट एग्जाम में दिया हुआ होगा. You need not remember this figure. 1.67 into 10 to the power of minus 27. Charge, you know that this is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19. Into strength of the magnetic field दिया हुआ है, that is 1.4. Clear? So this is how we will find out the time. Okay, so this is equal to 3.14 into 1.67, okay, upon 1.6 into 1.4 into 10 to the power of minus 27 है, इधर minus 19 है, so ये क्या हो जाएगा? minus 8. Okay, so इसको solve करेंगे either by using log table or by direct calculations we can calculate this. Okay, so this comes out to 2.3 4 into 10 to the power of minus 8 seconds. Okay, ये calculations अब I don't think there is any need to do these calculations by me. Okay, you can easily calculate. ये log table से calculate कर लेना बोर्ड एग्जाम के point of view से. Okay, और एंट्रेंस अगर हो तो फिर आप लोगों को डायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा. 3.14 into 1.67 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अलग से एंड देन डिवाइड. Okay, I hope this is pretty easy thing. So ये इसका टाइम पीरियड. क्लियर? Next one is 14th. What it says, there is a moving coil galvanometer which has a rectangular coil having 50 turns. So number of turns is equal to 50. Then it has dimensions of 5 centimeter by 3 centimeter. हम लोगों को एरिया लगता है इसमें. So area is equal to 5 by 3, that is 15 centimeter square. So this is equal to 15 into 10 to the power of minus 4 meter square. ये याद रखना, this is centimeter square. Okay, तो centimeter is 10 to the power of minus 2 meter. इसका square कर देंगे तो 10 to the power of minus 4 meter square होगा. Clear? Then magnetic field कितना है वहाँ पे available? 0.05 Weber per meter square. This is the magnetic field in which that coil is placed. हम लोगों ने derivation देखा था. देखो, अगर आप लोगों को याद है, इस टाइप से हमने कॉइल एक डाली थी. ओके, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था. तो दैट स्ट्रेंथ ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर. देन टॉर्शनल कांस्टेंट दिया हुआ है. टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द कॉइल ऑफ द स्प्रिंग, दिस इज इक्वल टू 1.5 into 10 to the power of minus 9 Newton meter per degree. Clear? So he is asking us to find out, and the deflection is given, that is 30 degrees. वो पूछ रहा है कि भाई कितना करंट फ्लो होगा तब जाके इतना डिफ्लेक्शन हम लोगों को गैल्वेनोमीटर में मिल पाएगा. ओके, सो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला हम लोगों ने देखा था, वही डायरेक्टली अप्लाई करना है.
उसके अनुसार phi is equal to what? NAB, number of turns into area of the coil into magnetic field divided by K into I. This is equal to phi. Okay, phi हम लोगों को दिया हुआ है. Phi is what? 30. Okay, number of turns is given 50. Area of the coil is 15 into 10 to the power of minus 4. B, strength of the magnetic field is given 0.05 divided by K. K is 1.5 into 10 to the power of minus 9 multiplied by I. Clear? So therefore, your I is equal to, अब इसको इधर इस तरफ शिफ्ट करो, 30 इंटू ये इस तरफ आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9 अपॉन इस तरफ क्या बचेगा 50 इंटू 15 इंटू 5 into 10 to the power of minus 2. Okay, so 10 to the power of minus 2, 10 to the power of minus 4, this is 10 to the power of minus 6. Clear? So इसको find out करेंगे, ये 0 0 cancel हो जाएगा, then 3 5s are 15, okay, then 5 3s are 15. Okay, so बचता क्या है? So what remains here? 0.3 into 10 to the power of minus 9 minus 6, that is minus 3 upon इस तरफ क्या बचा है? ये 5 बचे हैं और ये 5, that is 25. Okay, so now this is equal to, see this, you can write this as 3 into 10 to the power of minus 4. So ये 3 into 10 to the power of minus 4 है upon 25 है. Clear? So 3 by 25 is what? 0.12. 0.12 into 10 to the power of minus 4. So you can write this as 1.2 into 10 to the power of minus 5 amperes. This is the current that must flow through the coil so as to get a deflection of 30 degrees. Okay. The next one, 15th one. सारे सवाल इजी है, दे आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट्स ओके दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. उसमें जस्ट वैल्यूज रखना है, कौन सा वैल्यू कहाँ रखना है ये बस डिसाइड लेना है, डिसाइड करना है. एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का लेंथ है पाई मीटर्स. सो कैपिटल L इज पाई मीटर्स फॉर दिस सोलेनॉइड एंड diameter D is equal to 5 centimeter. And number of turns N is equal to 1000. Okay, and the current flowing through this is 5 amperes. Now we want to find out what is the magnetic field along the axis. Okay, solenoid you must be knowing that it's like this. इसके axis के वो parallel ऐसा magnetic field produce होता है. Now the strength of the magnetic field along the axis B is equal to mu 0 into N into I. What is this N? N is number of turns per unit length. So this will be given as what? Total number of turns upon length. Clear? So simply put the values. Mu 0 is equal to what? 4 pi into 10 to the power of minus 7 into number of turns is 1000 upon length. Length is pi into current, that is 5. Clear? So this is very easy. pi तो cancel हो जाएगा. 4 into 5 is 20 into यहाँ क्या बचेगा 10 to the power of minus 7 और ये 10 to the power of plus 3 मतलब 10 to the power of minus 4. ओके, इतना टेस्ला. तो या तो फिर इसको 2 into 10 to the power of minus 3 कर दो. ओके, so this is a straightforward question. चलो next one, question number 16.
क्वेश्चन नंबर 16 इज अबाउट अ टोरॉइड. ये क्या बोलता है टोरॉइड? It has a narrow radius of 10 centimeter. Okay, radius is given 10 centimeter is the radius, that is equal to 0.1 या 10 into 10 to the power of minus 2 meters. Okay, या फिर 1 into 10 to the power of minus 1 कर दीजिए. Then number of turns are 1000, so n is equal to 1000. And magnetic field is 5 into 10 to the power of minus 2. Magnetic field is 5 into 10 to the power of minus 2 Tesla along its axis. What is the current required so that we get this much of magnetic field? Okay, so current इसका टॉरॉइड होता क्या है आप लोग जानते हो. टॉरॉइड मतलब क्या होगा? ये जो आपका सोलेनॉइड है उसको हम लोग एक सर्कुलर रिंग के शेप में, डोनट के जैसा हम लोग एक एंड्स कनेक्ट कर देंगे. इसका मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस इज गिवन एज सेम μ0 n into I, where n is the number of turns per unit length. So ये कैसा मिलेगा? μ0 into total number of turns divided by, अब लेंथ कितना हो जाएगा? 2 pi into r. R is the radius. Clear? So into I. Clear? So therefore I will be equal to what? B into 2 pi r, ठीक है, divided by μ0 into n. Clear? So this is equal to B कितना दिया हुआ है? 5 into 10 to the power of minus 2 into 2 pi into what is the radius? Radius is 1 into 10 to the power of minus 1 या फिर 10 into 10 to the power of minus 2 जो हमने लिखा है. μ0 is what? 4 pi into 10 to the power of minus 7 into number of turns is what? 1000, that is 10 to the power of 3. Clear? So pi will cancel and 2 2s are 4, 2 5s are 10. Okay, so बचता क्या है हमारे पास? 5 into 5, that is 25 into 10 to the power of minus 2, 10 to the power of minus 2, that is 10 to the power of minus 4, और ये 10 to the power of minus 7 नीचे है, so मतलब 10 to the power of minus 3, 10 to the power of plus 3, that is 10 to the power of 0 मतलब 1. So बचता क्या है? Simply 25 amperes. Clear? So 25 amperes of current must be passed so that the magnetic field that is produced along the axis is this much, 5 into 10 to the power of minus 2 Tesla. Clear? So okay, this is problem number 16. Okay, I hope you have understood how to do this. In the next video lecture we will cover the remaining numerical problems. Okay, I am sure that you must be finding it very easy. इसको practice करना जरूरी है. Okay, so you keep practicing. I am sure you will be able to solve any of the numerical problems. Thank you very much.